The CAT 25 response sheets are sort of out because of all the glitches with the theta questions. एक fair idea है in terms of what to expect from the score and percentile. So right off the bat एक चीज बता देता हूँ that slot 1 seems to have been judged slightly less harshly by me. So apologies for all those people who got affected because of my analysis on the day of the CAT. मुझे लगा था that slot 1 was manageable, but it turns out that slot 1 was the toughest. So I underestimated slot 1 big time. So apologies for that again. I did not really think कि इतना difficult लगा होगा लोगों को. And जो DILR के repercussions थे वो quant में भी दिख रहे हैं. In fact, the calculators that I can see across the web, across institutes, I saw that slot 1 का representation is very low compared to slot 2 and slot 3. So I looked at the top 500, top 1000 people. तो वहां पे अगर मैं देख रहा हूँ तो slot 1 का representation काफी कम है. In fact, slot 1 के जो लोग हैं जिन्होंने टॉप 500 टॉप 1000 में फीचर कर रहे हैं दैट इज बेयरली 9% और 10%. सो 33.33% आइडियली होना चाहिए बट 10% है. दैट इज बेसिकली अ प्रॉब्लम बिकॉज वन या तो स्लॉट 1 के पीपल आर नॉट एक्टिवली अपलोडिंग देयर रिस्पॉन्स शीट्स और नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशंस, या फिर ऐसा भी हो सकता है दैट स्लॉट 1 के अंदर सब लोग बैठे थे जो इतने कॉम्पिटेंट शायद नहीं थे इंक्लूडिंग मी, राइट. सो दैट इज बेसिकली व्हाट इट लुक्स लाइक. बट मैंने स्केलिंग के अंदर उसको यूज किया है. आई हैव यूज्ड द सेम डेटा दैट इज देयर. Of course, if there is any deviation, I will let you know at a later point in time. But I have created score versus percentile charts for all three sections and overall for all three slots. So वो एक बार देख लेते हैं. तो मैंने काउंट क्या किया यहाँ पे. आई हैव लुक्ड एट द टॉपर ऑफ ईच स्लॉट एंड द टॉप 100 ऑफ ईच स्लॉट. टॉपर के अंदर मुझे बहुत डिविएशन इस बार नहीं दिखाई दिया है, नहीं दिखाई दिया है. सो दैट इज बेसिकली व्हाट द टॉपर एंड टॉप 100 विल इंडिकेट कि क्या एक स्लॉट के अंदर डिविएशन दिख सकता है. ऑफ कोर्स स्लॉट 1 के अंदर वी कैन जज बाय दैट टॉप 1 एंड टॉप 100, राइट. टॉपर एंड टॉप 100 के बीच में भी काफी डिफरेंस है इन स्लॉट 1 कंपेयर टू स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3. फिर आई हैव लुक्ड एट द एवरेज ऑफ एवरी स्लॉट दैट आई हैव फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, द स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर ईच स्लॉट दैट आई हैव फॉर ऑल द कैंडिडेट्स अक्रॉस द सेक्शंस. तो ये सारी चीजों को ऐड करके देन आई बेसिकली गॉट एन इमेज ऑफ द स्लॉट. अब उसके बाद अपेरेंटली द इजीएस्ट स्लॉट हैज बीन स्लॉट 2. तो सबको स्लॉट 2 के साथ अलाइन कर दिया जस्ट टू सी कि अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो कौन से परसेंटाइल पे कौन सा स्कोर आएगा. एंड देन आई कन्वर्टेड इट बैक इनटू द रॉ स्कोर ऑफ द एग्जिस्टिंग स्लॉट. अब यहाँ पे दो चीजें मैंने यूज की हैं, गॉसियन टेल एंड पीसवाइज एक्सट्रापोलेशन. नाउ व्हाट डज दिस मीन इन वेरी सिंपल वर्ड्स. कैट का जो स्कोर वर्सेस परसेंटाइल होता है वो लीनियर फैशन में नहीं होता. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर 100 परसेंटाइल 100 मार्क्स पे आया है, सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट 99 परसेंटाइल विल बी एट 99 मार्क्स. तो जो डिफरेंस होता है अगर टेल की तरफ हम देखेंगे तो गॉसियन टेल का मतलब ये होता है दैट टेल्स पे द स्प्रेड इज थिनर एंड बीच में द स्प्रेड इज स्लाइटली मोर. एंड पीस वाइज एक्सट्रापोलेशन के अंदर हम पूरा का पूरा मिड पॉइंट नहीं देख सकते. आई ऑल्सो अकाउंट फॉर कर्टोसिस व्हिच बेसिकली मींस दैट थोड़ा आगे पीछे इसका जो बॉडी होता है वो हो सकता है. तो ये दो चीजें यूज करके यूजिंग द डेटा फ्रॉम कैट 22, 23 एंड 24 आई हैव मॉडल्ड दिस एंटायर थिंग. एंड ऑफ कोर्स चैट जीपीटी जिंदाबाद, उसके अंदर मैंने सारा डेटा फीड कर दिया. Then I tweaked it on the basis of my experience, on the basis of the errors that ChatGPT had made, and this is what the final thing looks like. So if I just check this once, again, if you think that there is some deviation, something that is there that you don't agree with, let me know in the comment section. Please be civil in the comment section, and we can have a healthy discussion on what exactly did I do and कैसे मतलब ये data आया है. Now in terms of score versus percentile अगर VARC की बात करेंगे, so 99.5 percentile एकदम top league of VARC I expect to be at around 39 marks in slot 1, slot 2 के अंदर 45 and slot 3 के अंदर 49. So slot 3 seems to have had the easiest VARC among the three slots purely on the basis of data. I have not looked at the questions from all three slots, so उस पे मैं comment नहीं कर सकता, but purely on the basis of the data that I have received till now, I can look at this and say that okay, 99th percentile in slot 1 will be around 36 marks, slot 2 के अंदर 41, slot 3 के अंदर around 45. This is what it looks like. 98 percentile again will be slightly lower, and ये पूरा का पूरा ऐसा flow करना चाहिए. That is the estimate. In terms of DILR, now this is a big surprise for you guys. Slot 1 का DILR has seemed to be significantly more difficult compared to slot 2 and slot 3. Now slot 2 people, please don't kill me for this, but slot 2 seems to have been the most easiest DILR of the three slots. Again, according to the stats that we have had, 99.5 percentile in slot 1 will be around 22 marks. slot 2 के अंदर 37 तक बलून होगा, and this was exactly my problem with CAT 2025 जो DILR के अंदर amplify होके दिख रहा है. slot 3 के अंदर it's somewhere in between slot 1 and slot 2, so 30 marks is what we are looking at. So हमने देख लिया that VARC was the easiest in slot 3, DILR was the easiest in slot 2. Now I'm not saying it is easy.
तो इजी और इजिएस्ट में डिफरेंस होता है, राइट? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू टू अप्रिशिएट. स्लॉट 2 का 34 करस्पॉन्डिंग टू 99 परसेंटाइल, लास्ट ईयर वाज 38 मार्क्स बाय द वे. सो लास्ट ईयर का 38 जो 99 परसेंटाइल था वो इस बार 34 हो गया है. सो ऑफ कोर्स इट इज मोर डिफिकल्ट कंपेयर टू लास्ट ईयर, बट दिस इज वेयर आई थिंक द नंबर्स विल बी. Slot 1 में because of fewer people, these numbers might be skewed, but they are pretty much fair in my opinion, according to what the data says as well. In terms of QA, if you look at it, slot 2 and slot 3 are very similar, but slot 2 ka QA seems to have been easier. So overall, by now you would have got your answer. And slot 2 guys, please don't butcher me for this, but slot 2 seems to have been the easiest of the 3 slots. That's why I have taken that as the benchmark. Slot 1 के अंदर अगर देखो तो QA भी लोगों को difficult लगा है. So VARC people found to be slightly difficult in slot 1. DILR people were thrashed in slot 1, and QA के अंदर भी people underperformed in slot 1. A lot of it might have had to do with the kind of performance that people showed in the DILR section. तो ये हो सकता है एक बड़ा reason why people have underperformed. जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना, you will see that the gap closes significantly. So if you look at an 85th percentile, 12, 16, 15 are not very far away. But if you look at the topmost 99 percentile अगर देखते हो तो 23, 30 and 28, these are far apart. So QA के अंदर at higher levels there is a chance that people will get bigger spreads. तो ये decider section हो सकता है. People who have done extremely well in QA might have a good chance of getting a good percentile as well. Now talking about overall percentile, I expect the 99 percentile of slot 1 to be around 82 marks. Slot 2 का 94 is what the data is showing, and slot 3 का 89 is what it's showing. Now slot 2 के अंदर 94 जो है वो justified लग रहा है at this point in time to me, purely because if you look at what happened in the DILR section and the Quant section and the VRC, तीनों अगर देखोगे तो slot 2 seems to have been favored a bit more compared to slot 1 and slot 3. Again, slot 2 guys, please don't kill me for this, but slot 3 seems to have been the second most difficult slot, and slot 1 seems to have been the most difficult slot overall as well. So ये एक spread दिख रहा है मुझे यहाँ पे. So people who are scoring in the 50s and 60s, you can expect 90 or 95 percentile if you are from slot 1, and slot 2, slot 3 के अंदर slightly less than that. So you will see that एक percentile slab हम लोग नीचे गिर रहे हैं. So for example, if I'm saying that 50 marks corresponds to 90 percentile in slot 1, slot 2 के अंदर 50 will give you an 85 percentile, and slot 3 के अंदर it will be somewhere between an 85 and a 90 percentile. So that is what I think it's going to be. इसका क्या हम तात्पर्य निकाले? What is exactly the moral of the story here? So very straightforward. Slot 1 seems to have had the least data for some reason. Again, I'm saying या तो कम लोगों ने अपने response sheets upload किए, because of which there seems to be a skew. But having had a look at slot 1, again having had a look at my response sheet, I think that this data is fairly reasonable. And जो भी मैंने बात की है लोगों से, again it seems as if the prediction is that slot 1 seems to have been the toughest, and शायद लोग इतने डर गया, इतना खराब उनको लगा कि वो लोग अपलोड ही नहीं कर रहे शीट्स, ये हो सकता है. या फिर slot 1 के अंदर DILR का level of difficulty seems to have affected people very badly, and Quant also seems to have been messed up for slot 1. And of course VARC is the first section of the first slot. थोड़ा nervousness होता है, people tend to perform slightly poorly in terms of VARC. Even I think I have underperformed in terms of VARC compared to what I was expecting. So उस हिसाब से अगर देखेंगे तो slot 1 seems to have been the one that has been affected most badly. In case there are any updates, in case I see that suddenly slot 1 के लोगों ने अपने scores update करना शुरू कर दिया है, I will share an update to this particular thing. तो मैं एक addendum बना के डाल दूंगा, saying that there has been a significant deviation in what I had expected and what is happening. So don't make decisions on the basis of this particular thing. Don't treat this as a holy grail. This is just a speculation, I would say, and उसको उसी की तरह treat करना. This is only for you to make broad decisions. This is not for you to decide how your life is going to happen, right? तो broadly अगर कोई college को apply करने की कोशिश करे थे या ZAT को apply करने के लिए you are trying to keep benchmark of CAT 25 का score, then this is basically what will help you. But if you are trying to think about bigger things in life, should I drop my plans of doing an MBA? Should I go for CAT 26? This is not the thing that you should use for making those decisions. And there will be deviations. I can't promise कि यही data होगा जो final भी right होगा. Every year we do these predictions, and every year there are deviations that exist, जो होता है. But the idea is for us to kind of come up with a thing that we can tell you so that you can make informed decisions on the basis of that. तो उसको ऐसे ही treat करना, बहुत ज्यादा उसको देके कोई seriously decision लेने की जरूरत नहीं है. Now, I will suggest one thing very vehemently, which is move on to the next test. Be it SNAP, be it MyCAT, be it NMAT, जो भी test आ रहा है, as soon as possible try to move on to that particular test. Do well in that particular test. उसको lightly मत लेना, नहीं तो होगा ये that then you will end up blaming CAT 25 for everything that goes wrong in this season. So please don't do that. I know it has been conducted
rather unprofessionally, I would say. अगर ये data points are to be believed, slot 1 has been treated extremely unfairly, I will say. एंड स्लॉट 2 वालों को भी काफी खराब लगेगा, बिकॉज उनका स्कोर बेकार में नीचे आ जाएगा या फिर बाकी लोगों का स्कोर ऊपर चला जाएगा. सो आई डोंट थिंक इट वाज फेयर फॉर एनी स्लॉट, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ द डीआईएलआर का वेरियंस. विथ टाइम वी विल बी एबल टू फिगर आउट कि ठीक है कहाँ पे वेरियंस आ रहा है, वॉज इट जस्टिफाइड डीआईएलआर में, और क्या कर सकते थे. बट एट दिस पॉइंट इन टाइम इट स्टिल सीम्स एज इफ द स्कोर्स आर गोइंग टू बी lopsided, and one section or one slot is incredibly more difficult compared to the other two slots. So अभी उसके बारे में डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है. हॉल टिकट्स डिले हो गए थे. There was this whole fiasco जहां पे they kind of released the center details and the slot details, then shift details change हो गए, तो वहां से शुरू हुआ था. You look at the test, ये सब चीजें हुई. There has been no apology or there has been no how do I put it, right? इतना सारा अगर फ्यूरोर हो रहा है, not everybody will be screaming for no reason, right? Just because some people are saying it, ऐसा जरूरी नहीं है that लोग कुछ रिएक्ट ही नहीं करेंगे. कुछ तो एक रिएक्शन होता, कुछ तो एक चीज होता that we are looking into this, we have heard of quite a few grievances, but हम कुछ करेंगे इसके बारे में, कुछ सोचेंगे. एटलीस्ट से दैट नॉर्मलाइजेशन विल टेक केयर ऑफ इट. अगर नहीं भी होता तो भी कुछ तो बोल दो, एटलीस्ट गिव सम स्टेटमेंट. बट देयर हैज बीन नथिंग फ्रॉम देयर एंड. ऐसा लग रहा है कि कोई किसी ने कुछ बोला ही नहीं. एवरीथिंग वाज फाइन, एवरीथिंग वेंट वेल. द नंबर ऑफ पीपल हु अपीयर्ड फॉर द टेस्ट सीम्स टू बी अराउंड 2,40,000 2,50,000. सो आई एम अज्यूमिंग अराउंड 80,000 पीपल पर स्लॉट. दैट इज व्हाट इट सीम्स टू हैव बीन लाइक. एंड ओवरऑल अगर देखोगे तो लेट्स सी अभी ऑब्जेक्शंस में क्या होता है, बिकॉज आई कैन क्लियरली सी सम क्वेश्चंस दैट आर ग्रेडेड इनकरेक्टली. इवन रिस्पॉन्स शीट्स के अंदर देयर वाज दिस स्मॉल फियास्को ऑफ टीटा आंसर्स नॉट शोइंग अप, राइट. सो पॉसिबल आंसर दिखाया ही नहीं थे. एंड देयर सीम्स टू हैव बीन अ हाफ बेक्ड एफर्ट. ऐसे लग रहा है दैट यू आस्क समवन टू डू सम वर्क एंड उन पे पूरा छोड़ दिया है, तुमने बिल्कुल भी मतलब इंटरवीन करके नहीं सोचा है कि यार वो ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. इट सीम्स टू हैव बीन दैट काइंड ऑफ अ ईयर. So let's see what happens later, and let's hope that something good comes out of it. At least the normalization takes care of things. कुछ तो सही हो is the expectation. So let's see how that goes. In case you have anything to say about this, please let me know in the comment section, and please be nice and civil and respectful, right? I am creating this purely on the basis of the data that is available. मैंने अपना कोई दिमाग इसके अंदर नहीं लगाया है. So purely on the basis of the data that is available, I am doing this. And in case कुछ updates है तो definitely I will let you know. So please let me know what are your thoughts on this, and we will see what we can do about the other tests that are coming up in this season.